क़ियामतन वला नुशूरा। फरमाइए किसके हाथ में है? का सिर्फ तने तनहा एक अल्लाह के हाथ में है। आप अंदाजा लगाएं, जिब्राइल अमीन इतने बड़े फरिश्ते हैं कि अगर अपनी असली शक्ल में आ जाए तो सातों जमीन के नीचे इनके पैर हो और सातों आसमान के ऊपर अर्श पर इनका सर हो। इतना ताकतवर फरिश्ता जब कौम लूत के उजाड़ने का हुक्म दिया अल्लाह ने, तो अपने पर के कोने को जमीन के नीचे डालकर जमीन समेत आसमान तक इनको लेकर गए और इनके उल्टा दिया। इतना बड़ा ताकतवर फरिश्ता जब मेराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया है तो एक मकाम पर जाकर कहता है, अगर यक्सर वो ये बदतर परम फरोग तजल्ली व सोजत परम, वहां जाकर यूं कहता है कि आका यहाँ तक आने की इजाजत है अल्लाह की तरफ से, अगर यहाँ से आगे एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो जलकर खाक होगा। इतना बड़ा फरिश्ता कुछ नहीं कर सकता है, तो दुनिया का कोई भी इंसान, जिन या दुनिया का कोई सबब न किसी की जिंदगी को बना सकता है और न किसी की जिंदगी को उजाड़ सकता है। जिंदगियों के बनने का, उजड़ने का ताल्लुक सिर्फ एक अल्लाह की जात के साथ है। अल्लाह ही बनाते हैं और अल्लाह ही जिंदगियों को उजाड़ते हैं। My respected brothers, this effort of da'wat is to learn this yaqeen. This effort of da'wat is to learn this yaqeen that Allah subhanahu wa ta'ala is the khaliq, Allah is the creator, and everything else that we see, my brothers, they are all creation, they are all created, and the creation cannot do anything without Allah subhanahu wa ta'ala. Let it be the smallest particle or an atom, or let it be a big mountain, or let it be a drop, or let it be an ocean. My brothers, let it be an ant, a small creation like an ant, or let it be a giant creation like Jibreel alayhi salam. Whatever the size or the shape and the form that we see from the creation cannot do anything. They cannot benefit, they cannot harm, they cannot exist, they cannot come into existence, and they cannot even finish from the existence, and they cannot be resurrected by themselves. All of these things, they are dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. So my brothers, the yaqeen of the creation, that creation cannot do anything without the help of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala alone is the creator, He alone is the doer. That yaqeen has to be inculcated in our hearts. We see that Jibreel alayhi salam is such a great creation of Allah subhanahu wa ta'ala. When he stands at his full form, his feet will be touching, his feet will go beneath the 7 earths, and his head will be going above the 7 skies. Such a huge angel of Allah subhanahu wa ta'ala. When he accompanied Rasul sallallahu alayhi wa sallam in Mi'raj, he went up to the 7th sky, and then he went up to a certain level, and then he said, "O Rasul sallallahu alayhi wa sallam, if I go an inch above this, if I go a slightest bit above this height, I'll be burned and I'll be finished. So I cannot go any further. I do not have any permission to go any further." So imagine such a huge creation of Allah subhanahu wa ta'ala. The power of his wings, as mentioned, that when he was commanded to go to the qawm of Lut alayhi salam, and he went with one corner of his one wing, with the corner of his one wing, he took the entire region where Lut alayhi salam's tribe lived. He took them from beneath the ground from them, and he took them above all the way up on the sky, then flung them back to the earth, my respected brothers, with one wing. Imagine the strength and the power and the size of Jibreel alayhi salam. Even this angel could not go a slightest bit above where Allah has given him permission. So my respected brothers, without the permission, this angel cannot do anything either. So that's why this yaqeen has to be in our heart, that it is Allah and only Allah who is the doer of everything. That yaqeen has to be inculcated in our hearts. मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह की यहाँ जिंदगी के बनाने का और उजाड़ने का अंधाधुंध निजाम नहीं है कि इसकी उजाड़ दिया और उसकी बना दिया, बल्कि अल्लाह की यहाँ जिंदगियों के बनाने का एक ही ज़ाब्ता है, और वो ज़ाब्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह उसकी जिंदगी बनाएंगे जो अपनी पूरी जिंदगी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढाल दे, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक, और जूता पहनने से लेकर नमाज तक, और शादी से लेकर हुकूमत करने तक, जिंदगी के हर शोबे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी भी जो अपने आप को ढाल लेगा, अल्लाह जल्ल शानो उसकी जिंदगी को बना देंगे और अल्लाह इसको अपना महबूब बना देंगे। इसीलिए अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाए हमारे नबी जी, आप अपनी ज़बान मुबारक से ऐलान करिए कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरे पीछे पीछे चलो,
इत्तिबा कहते हैं पीछे पीछे चलना, हर काम ऐसे करना जैसे आका ने किया है। फरमाया जब तुम ये करोगे तो अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेंगे, और अगर गलती हो जाएगी तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देंगे। और जब आदमी अल्लाह का महबूब बन जाता है तो अल्लाह की हिफाजत पे ये चलता है, दुनिया की कोई ताकत इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। एक अल्लाह वालों के बारे में आता है कि वो एक वक्त में जा रहे थे, रास्ते में बारिश का जमाना होगा, सामने से एक आदमी अपनी औरत के साथ आ रहा था, इनके पैर से कीचड़ उड़ा और उसके कपड़े पर चला गया। अब उस औरत के यार को गुस्सा आया, उसने उठाकर एक अल्लाह वालों को तमाचा मारा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ऐलान करवाया, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब। फरमाया जो हमारे वली को सताए और हमारे वली से दुश्मनी करे, अल्लाह फरमाते हमारा उसके साथ ऐलान जंग है। और यूं फरमाया कि जो सूद में हाथ डाले, अल्लाह फरमाते हैं उसका हमारी तरफ से उसके लिए ऐलान जंग है। लिहाजा थोड़ी देर में वो मारने वाला गिरा और मर गया। अब औरत ने शोर मचाया, मार दिया मार दिया मार दिया, तो लोग जमा हो गए। अब जमा हो गए तो कहा क्या हुआ क्या हुआ, अब कौन जवाब दे क्या हुआ। तो अल्लाह वालों ने कहा हुआ कुछ भी नहीं है, ये तो यारों का मामला है, जिसके यार को गुस्सा आया तो मुझे मारा, हमारे यार को गुस्सा आया तो उसने उसका काम तमाम कर दिया। My brothers, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, with Allah subhanahu wa ta'ala to make us successful, there is no whimsical ways of okay this way or that way. There is only one way that Allah subhanahu wa ta'ala will make us successful, and that is the way shown to us by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is the only way. That every facet and every walk of our life, everything that we do in our lives, my respected brothers, we have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam. From clipping our nails to maintaining our hair, from marriages to up to the ruling of the countries, everything has to be according to the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If we do everything according to the way of Rasul sallallahu alaihi wasallam, then Allah subhanahu wa ta'ala will love us. Allah azza wa jalla said in the Quran that, O my Nabi sallallahu alaihi wasallam, tell the people that if they truly love Allah subhanahu wa ta'ala, if they truly love Allah subhanahu wa ta'ala, then they must follow your footsteps. They must follow your footsteps. They must go behind you and follow you in every aspect of their lives. My dear brothers, we have to follow Rasul sallallahu alaihi wasallam, and then what will happen? Allah subhanahu wa ta'ala will make them Allah's beloved. Allah will love them, and also Allah subhanahu wa ta'ala will give them protection. Allah subhanahu wa ta'ala will protect them. My dear brothers, if we follow Sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah will love us and Allah will give us protection. And how Allah will love us? How Allah gives us protection? He's citing a story that one time a friend of Allah, a very pious person, he was walking by. Perhaps it was rainy season and there was muddy clay on the ground. So he was walking, and at that time beside him also a man was walking with his wife. So now while walking, somehow from under the shoes of this pious man, some mud or some clay splashed and went on the dress of the lady that was walking by. Now when the lady's husband saw that some mud came on her dress, he became very upset, and he came and he slapped this pious man. He slapped this pious man. So within few minutes, in no time, this person who slapped this pious man, he fell on the ground and he expired, he died. Now this lady, she started screaming and yelling, "Oh, what you have done to my husband, what happened?" And people gathered from all over the place to look at this situation, what happened. Now, nobody could of course answer what's going on. Then finally this pious man himself said, he said, it is about the love and the beloved. It is about the love and the beloved. When something fell on you, your beloved, he could not stand it, so he slapped me. And when something happened to me, my beloved could not stand it, and he also took care of him. So it is about the love and the beloved. So my dear brothers, this way we have to understand that Allah subhanahu wa ta'ala has given us sunnah of Nabi sallallahu alayhi wasallam, and has given us a life. Once we follow that life, my respected brothers, then we'll be successful. As Muslim Maulana also mentioned, that a person who goes against a wali of Allah subhanahu wa ta'ala, a friend of Allah subhanahu wa ta'ala, it is as if he is announcing a war against Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, the person who is dealing with interest, he is declaring war against Allah subhanahu wa ta'ala. So in this case, this wali of Allah